morning, students and learners. So, we were discussing about fault diagnosis and characterization. I'm Neha Sharma, Assistant Professor at Department of Electronics and Communication Engineering at Engineering College, Jhalawad. In the previous lectures, we discussed about failure analysis, parametric analysis, short and open tests, Van der Pau test structure, complete test, and we discussed about the binning and the sort test, and lastly we discussed about BIST, that is built-in self-test. So what is actually is happening in self and build test is we check for the logical functioning of our circuit under test or design under test, DUT. So as you can see in the diagram here, we have this test generator. It is also known as ATPG, that is automatic automatic test vector pattern generator, and it is given to the circuits, and then the outputs are measured, and the error can be find out, like it is actually getting the expected outputs or some other output we are getting which is an error. So that thing we can test by using your built-in self-test, BIST. Next one is memory testing. So memory takes a very large portion in our in any processor or in any circuit. So testing of memory is very tedious task. So what we do is first one we are discussing the failed bit map. So in the memory region, the bits are arranged in rows and columns. If two bits fail randomly in a chip, then it is difficult to identify the cause of the failure. However, if a row of bits have failed based on the design, the engineer will be able to conclude that, say suppose M1 line has shorted. If a column of bits have failed, the engineer can conclude that a particular metal line is open. So the rows here are called the word lines and the column here are given the bit lines. So a series or the whole row or whole column is getting up failed, then we can judge it. So you can see in the diagram here. Next one is memory repair. Suppose if few bits are not acting properly, are not functioning properly, then we can repair it. So I have taken an example. What we do in memory repair is, suppose we want to make the memory for say suppose 4 cross 4 16 bit की मुझको memory चाहिए suppose. So instead of taking only 16 bits, we have to take extra bits. We will take extra bits. So in this case, I have taken 5 rows and 4 columns. So it is actually 20 bits. Okay. So as you can see here, I have taken these 5 rows and 4 columns. So first we will do the pre-fuse test. So this extra bit means 16 bit चाहिए, तो we are actually making 20 bits. एक extra row add करने से मेरे पास 4 bits 4 extra bits हैं मेरे पास, है ना. तो we will do this pre-fuse test. So if it is passed, then the extra bit, you can see here R5 row 5 are the extra bit or the extra row, the connection through it are removed by laser. ठीक है. अगर ये pre-fuse test fail होता है and we find out कि suppose R2 जो था मेरा, R2 जो row है, इसके अंदर जो bits हैं mostly those are defective. As we discussed in the previous slide कि complete row और complete column का failure होगा, तो complete row में suppose maximum bits are defective, तो this whole R2 row के जो connections हैं इनको हम laser के through हटा देंगे, and the extra bit जो हमने add करी थी R5 row उसको हम लोग fuse कर देंगे. इसके बाद post fuse test करेंगे कि whether actual this thing is working properly or not. तो ये fuse के memory repair अप्लाई करने से क्या है कि 100% हमको यील्ड नहीं मिलता, कि मतलब ये नहीं कि 100% इट इज़ परफेक्ट, बट जनरली 95% और मोर यील्ड वी कैन गेट बाय यूजिंग दिस मेमोरी रिपेयर. अब इसे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो एक्स्ट्रा
रो ऐड करने से, एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करने से हमको क्या है कि एरिया बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा. तो इसमें क्या है कि मेमोरी, so we have to actually balance between adding extra bits to enhance the memory yield and occupying extra space. So we have to just look into this. Moving on to the next is high temperature test. So in this, what we do, the chip is subjected to high temperature and it is tested. So we can see in military applications, whenever we are designing the chips, very high end chips for the military purposes, it should, you know, function well in deserts where the temperature can go above 50 degrees centigrades, and in the glacier area where your temperature can go below -10 -40 like that. तो इतना टेम्परेचर वेरिएशन जो हो रहा है, इतने टेम्परेचर वेरिएशन के बाद भी आर chip should actually work perfectly in desert area as well as in the glacier. तो उसके लिए क्या है कि we have to do temperature test. ठीक है, so high temperature tests we are doing, and also if we are designing the chip for satellites, ठीक है, like इसरो जो है वो हमारे सैटेलाइट्स के लिए चिप्स डिज़ाइन करता है. तो उसके अंदर भी टेम्परेचर वेरिएशंस आर वेरी हाई, वेरी हार्श कंडीशन. सो एक्चुअली इट शुड वर्क वेल. तो इसको इंश्योर करने के लिए वी विल गो फॉर हाई टेम्परेचर टेस्टिंग. नेक्स्ट वन इज़ योर ऑप्टिकल टेस्ट. तो इससे पहले जो हमने जितने भी टेस्ट्स पढ़े हैं, दोज आर योर इलेक्ट्रिकल टेस्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स है. बट जो भी टेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूवी रीजन में हमारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो यूवी रीजन में भी वर्क करते हैं. तो ये जितने भी टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोज कम्स अंडर योर ऑप्टिकल टेस्टिंग पार्ट. सो ऑप्टिकल टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, व्हाट वी इंश्योर कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफेक्ट्स ऑन योर वेफर. तो ये एक्चुअली इट डिटरमाइंस कि भाई कोई डिफेक्ट्स है कि नहीं है. अब डिफेक्ट्स कैसे आ सकते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गया हमारे वेफर के ऊपर, तो उसकी वजह से, या कोई प्रोसेस में फेलियर हो गया, तो उसकी वजह से ये सारे डिफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड. अभी डिफेक्ट्स जो मैं डस्ट पार्टिकल की बात कर रही हूँ बेसिकली, तो वो कहाँ से आएगी. यू नो योर चिप और योर वेफर फैब्रिकेशन गोज थ्रू वेरियस स्टेप्स. ठीक है, एवर स्टार्टिंग फ्रॉम सिलिकॉन फैब्रिकेशन, सिलिकॉन प्रोसेसिंग टू द लास्ट मेटलाइजेशन. ठीक है, अब हमने प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे स्टेप्स देखे, उनमें से एक स्टेप था CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन. तो CVD के टाइम पे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स मे बी प्रेजेंट इन द चैम्बर और इट मे फॉल ऑन योर वेफर. तो द डस्ट पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व वेरी फ्रिक्वेंटली, देन द CVD चैम्बर मस्ट बी क्लीन बिफोर इट इज़ यूज्ड. अनदर एग्जाम्पल इज़ CMP प्रोसेस, है ना, जो हम प्लेनराइजेशन के टाइम पे करते हैं, दैट इज़ केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग. अब पॉलिशिंग के टाइम पे क्या है कि डीप स्क्रैचेस आ सकते हैं वेफर में. ठीक है, अब क्या स्लरी लगा के हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, तो कई बार क्या है, स्लरी मटेरियल्स में अगर पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, है ना, तो उसकी वजह से क्या है, स्क्रैच आ जाएंगे आपके वेफर के ऊपर. अब स्क्रैच आने की वजह से क्या है, ऑफ कोर्स दिस स्क्रैच विल बी अ प्रॉब्लम इन आर दिस. अब वो ऑप्टिकल टेस्टिंग जो होगी उस पर वो फेल कर जाएगा. सो इसका ये है कि भाई स्लरी को इट शुड बी फिल्टर्ड सो दैट द स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल्स आर प्रेजेंट और उस पर स्क्रैचेस ना बने. सो द साइज ऑफ डिफेक्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड आर वेरी वेरी स्मॉल. दैट मीन्स इट इज़ लेस देन 100 नैनोमीटर. लेस देन 100 नैनोमीटर आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा पार्टिकल होगा, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल डिफेक्ट्स आ सकते हैं इसमें, है ना. हमने बहुत सारे डिफेक्ट्स भी पढ़े थे उसके अंदर, जैसे लाइन डिफेक्ट आ गया है, प्रेसिपिटेशन हो गया, पॉइंट डिफेक्ट आ गया. तो ये सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं इसकी वजह से. और ये डिफेक्ट्स को की टेस्टिंग कौन करेगा, वी विल डू ऑप्टिकल टेस्टिंग पार्ट विच विल टेस्ट कि भाई उसमें डिफेक्ट है या नहीं है ड्यू टू सम डस्ट पार्टिकल. Now it must be noted that the feature size present in the chip such as interconnect, copper lines are also of similar size. Hence the equipment must be able to distinguish between your desired feature
and unwanted ones, such as dust. ठीक है. One way of handling this is to image two neighboring chips simultaneously and compare them. If both images are the same, then it can be assumed that there are no defects. When they are different, the presence of defect can be identified. तो ये जो भी imaging हम करेंगे, ये जो भी इमेजिंग के लिए जो भी टेक्निक्स वी यूज, इट कम्स अंडर योर ऑप्टिकल टेस्टिंग पार्ट. ओके, सो टिल नाउ यू हैव सीन ऑल द फॉल्ट डायग्नोसिस, है ना. मेमोरी का भी हमने फॉल्ट डायग्नोसिस देख लिया, ऑप्टिकल टर्म्स भी देख लिया भाई, टेम्परेचर का भी वी हैव सीन हाउ इट इज़ वेरिंग एंड हाउ वी कैन डू. सो दिस इज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ योर फॉल्ट एनालिसिस. वी विल नॉट गो इन टू द डीप कि भाई ऑप्टिकल टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, या सपोज टेम्परेचर में जैसे हमने बात करी थी, नेगेटिव बायस टेम्परेचर है, NBTI जो हम लोग उसके अंदर प्रोसेस करते हैं, वो इन डेप्थ वी विल नॉट गो. इन आवर करिकुलम ओनली ओवरव्यू इज देयर. In depth पे, if you want to read, if you are interested in this, you can of course go, and there are plenty of sources available. I would recommend NPTEL or some standard book that you can follow for reading about it. But for now, according to the syllabus of RTU of IC technology, only a basic overview is sufficient for you. So now the last topic remaining is your characterization, that we'll discuss in upcoming lecture. So thank you for today.